So this is the general diagram where you can see bark, as we have the bark and its types in the syllabus. So bark में यहाँ पे आते हैं, बारक में यहाँ पे आते हैं, बारक में कौन कौन टिश्यू आता है? एक आता है इसमें लिविंग फ्लोयम, और फ्लोयम के साथ साथ कारक कैम्बियम, कारक, कारक कैम्बियम एंड कारक, इन दो को हम पेरिडर्म कहते हैं। इसलिए इन बारक इन टोटल वी हैव लिविंग फ्लोयम प्लस पेरिडर्म। अगर somebody tells you what is bark, bark is now bark is now it has two portions now bark, it comprises of, एक तो बारक में लिविंग फ्लोयम आता है, बारक इज इक्वल टू लिविंग फ्लोयम, फ्लोइंग इज यूजुअली लिविंग, एंड प्लस इसमें आता है पेरिडर्म। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज इन पेरिडर्म? पेरिडर्म में होता है कारक कैम्बियम, कारक कैम्बियम एंड कारक। मैं एक मिनट आपके साथ व्हाइट बोर्ड एक शेयर करता हूँ। यू सी दिस व्हाइट बोर्ड? जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट का, सेकेंडरी ग्रोथ यू हैव रेड इट इन 11th क्लास एज वेल एज इन एनाटॉमी ऑफ योर सेकंड सेमेस्टर परहैप्स। सेकेंडरी ग्रोथ का सिंपल जो डिफिनेशन है, इट इज इंक्रीज इन थिकनेस, increase in thickness. And this increase in thickness, how this increase in thickness occurs? Increase in thickness के लिए टिश्यू चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम जो बनता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम कंप्राइजेज ऑफ इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम एंड इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम। Interfascicular cambium, intrafascicular cambium, that as a whole constitutes the cambial ring. This vascular cambium, what it does, it cuts outside secondary phloem. This is secondary phloem, this portion, and to inner side, it cuts secondary xylem. Secondary phloem, and towards inner side, it cuts secondary xylem. Secondary xylem. Now, secondary xylem, usually botanically, secondary xylem is called wood, secondary xylem. Secondary phloem के बाद और एक मसला हो जाता है कि इस प्लांट को ग्रोथ में इंक्रीज होना है, another cambium develops in the cortex of the plant. That cambium is called, यहाँ पे you focus here, इस कैम्बियम को हम कहते हैं कार्क कैम्बियम। क्या कहते हैं? Cork cambium. एंड दिस कारक कैम्बियम, इसका दूसरा नाम है कारक कैम्बियम का, इट इज आल्सो कॉल्ड हेलोजन। क्या कहते हैं इसको? Halogen. हेलोजन। एंड नाउ दिस कारक कैम्बियम which has developed, it is a secondary meristem and it has developed later on. Initially it was not present. This halogen or कारक कैम्बियम, again what it does, it cuts, ये बाहर की तरफ काटता है another tissue that is called the phellum. उस टिश्यू को PHELLEM phellum कहते हैं। Phellum is also called cork. Cork is in some plants exploited for commercial purposes. For example, Hevia brasiliensis में जो एक रबर प्लांट है, and when it cuts phellum towards outside, it cuts phelloderm towards inner side. Phelloderm हो गया secondary cortex. So keeping these facts in view, these points in view, we will again go to the presentation that is here. You see here, यहाँ पे vascular cambium था, vascular cambium ने अंदर की तरफ जाइलम बनाई है, एंड जाइलम में दो वुड्स है, एक हार्टवुड है, दूसरा सैपवुड है, दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ। यहाँ पे जो बाहर बनी है, दैट इज द फ्लोयम। नाउ दिस फ्लोयम, दिस लिविंग फ्लोयम प्लस दिस कारक कैम्बियम एंड कारक,
This cork cambium and cork, both these constitute the periderm, along with the living phloem. We call the whole tissue as the bark. अब आपको आ गया समझ बारक क्या है। डायग्राम को स्टेटस रखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। These are different barks on their surface view. You see how many types of barks are here. Though the picture is a bit blur, आप फिर भी देख सकते हैं। Can you visualize it? यहाँ पे these are, यहाँ पे this is smooth bark. You see it? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्मूथ बार्क है। स्मूथ बार्क के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। किन में होता है? दिस बार्क, दिस इज द बार्क विद द लेंस शेप्ड ओपनिंग्स, दीज आर कॉल्ड लेंटिसल्स। एंड येलो बिरिच बेट्यूला में ये बार्क पाई जाती है। we have another bark, this bark. Here we have the peeling strips and ये paper birch betula papyriferarum betula में in ancient days, पुराने जमाने में we got paper from the betula. Nowadays too, the bark of the betula can be used as paper. And we have here this type of bark, that is here in the bark there are vertical cracks. ये क्वारिकस रुब्रा में होता है। वी हैव दिस इज स्केली बार्क, यहाँ पे स्केल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक चेरी। एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ बार्क जहाँ पे ये पैलेट्स दिखते हैं। पैलेट्स ब्लैक बर्च बेट्यूला स्पीशीज है। दिस इज द वर्टिकल स्ट्रिप्ड बार्क अगेन रेड मैपल में। दिस इज हियर इट इज द रिजिड बार्क एंड these are present in so many plants trees like Fraxinus americana. We have again the rigid bark. This broken, it is broken horizontally and it is present in white oak. We have this uninterrupted ridges. And to your surprise, जो आप वो दालचीनी खाते हैं घर में, cinnamon, that too is a bark, वो भी एक bark है। So you have you know that botanically what is now bark? Can anybody tell me what is bark now? Botanically क्या गो bark? अभी बता रहा था ना मैं रिवाइज करूं या shall we move on? सर आगे पढ़ेंगे। ठीक। Bark is comprises of living phloem and the cork cambium. पेरिडर्म, Cork bark, cambium and cork. अब यहाँ पे periderm why do trees have bark? Bark जो है it protects the delicate cambium layer living cells from bumps and cuts. Bark gives the protection to the tree uh, against the temperature extremes. Bark protects the trees from intense light. Like scab on a wound, bark protects against disease organisms. जिस तरह you radiant human beings that we have the first line of defense as sicken. जब हम इम्यून रेस्पॉन्स पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम में, द फर्स्ट लाइन दैट कम्स इनटू आवर डिफेंस इज सिकन। Likewise, too in the plants in the trees, usually bark is present in trees. It comes as a defense line against so many pathogens. Bark is somewhat porous, so bark also helps the plants to breathe. In breathing, you mean taking enough this gaseous exchange. And bark can also prevent water loss. Some uses of bark are, what is the bark used for? You see here bark, we have some uses of bark. Chemicals can be extracted to tan leather or used as dyes. These are the chemicals or secondary metabolites that plants release through the bark. Some bark has medicinal values when steeped into tea or ground. जब इसको पीसा जाता है. Inner bark can be used to make rope, weave baskets, cane chair bottoms, and also used to make cloth, canoes, surface for paintings, map making. Some bark is flammable and used to start fires. Bark can be used as shingles and
bark coverings. You can even have bark pieces in your homes as decorative pieces for decoration. Here again, we have a clear image of bark, types of bark. You see here, it is very simple. Can you see it? आप इस डायग्राम को Yes, देख sir. सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, देखिए, these are basic bark types. This is smooth bark. यहाँ पे आप ridges नहीं देखते हो. It does not have grooves. It is not rough. We have the here scales. Here bark is in pallets. We have this papery bark, for example, in betula, and you can have these sheets exfoliations. We have this here furrows, or here it is furrowed bark, palette bark, scaly bark, smooth bark, shaggy bark, and there can be so many other types of bark as well. This is again a botanical description of what bark has. This is the periderm outer layer, periderm. It replaces the epidermis in the secondary growth. And this is the phloem. Phloem plus periderm. It will all constitute the bark. And inner to this phloem, there is secondary xylem. That xylem may be of hardwood or sapwood. Now, again here, bark has two portions. One is phloem and second is periderm. If anybody asks you or any exam, you may be asked that does bark contain the living tissue? You can instantly reply that yes, it has a living phloem and it can have living tissue. So bark will include phloem, which has been cut by the secondary vascular cambium, which cuts phloem and xylem. Phloem, secondary phloem towards outer side, and secondary xylem towards inner side. That secondary phloem will, along with the periderm, will constitute the bark. Now, what is periderm? Here, the this is the periderm. Periderm में यहाँ पे कार्क कैम्बियम होता है. कार्क कैम्बियम is also known as halogen. कार्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फैलोजन. दिस कार्क कैम्बियम cuts towards outside the कार्क, इसको हम फैलम भी कहते हैं, and towards inner side it cuts phalloderm. Now all these layers, that is phalloderm, कार्क कैम्बियम, फैलोजन, and this phellum कार्क, they all constitute the periderm. इसमें पेरिडर्म आता है. सो इन पेरिडर्म प्लस फ्लोयम इज इक्वल टू बार्क, और यू कैन से हियर दैट फैलोडर्म, कार्कैम्बियम, फैलोजन, फैलम प्लस फ्लोयम इज इक्वल टू बार्क. आ गया समझ? यस, आई होप सो. इट इज इजियर नाउ. ठीक. Sir. किसी को कोई इशू? रिपीट करूं या आगे? अगेन सी हियर, यहाँ पे can you visualize it? Can you see it? आप देख सकते हैं ये? Yes, sir. अगेन क्या है ये? These are different types of bark. तो शूशन एप्पल ट्री में एक बार्क होता है. यहाँ पे दिस bark इज स्मूथ, यहाँ पे दिस इज द bark, यहाँ पे ऐसे रिजिस है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है. सो यू गॉट सम आइडिया अबाउट व्हाट इज नाउ bark. अगर ये एग्जाम में आएगा, you have to describe it. डिपेंड्स कि इसको एग्जामिनर कैसे पूछेगा, हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. दीज आर, यहाँ पे दिस इज लेबलिंग. ये जो ए डायग्राम है, इट इज स्ट्रेचड बॉक ऑफ एडानसोनिया. जो बी है, इट इज एक्सफोलिएटिंग बार्क. इसमें एक्सफोलिएशंस होते हैं. एंड दिस इज फ्रूट बार्क, सी, ऑफ क्वारिकस सुबर. नाउ दिस इज पीलिंग बार्क, यहाँ पे पील्स उठते हैं. सो वी आर नाउ एट पेरियांट टाइप्स. पेरियांट हमने वो, जब हम फ्लोरल मॉर्फोलॉजी पे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, उसमें हमने पेरियांट सारा पढ़ा. पेरियांट जो है, it can include the aspects of entire perianth. For example, it would include the aspects of only calyx,
It can include aspects of corolla, hypanthium if present. Generally, perianth type is based on the structure of corolla alone. यानी so आपने वो corolla types अलग से पढ़े हैं. But that is the loose definition of the perianth. Actually, perianth includes both calyx and corolla. And when the calyx and corolla are not differentiated in two layers, that becomes the perianth, the true perianth. And there neither there is sepal, neither there is petal. There is another member now, that is the tepal. So the group of tepals or the whirl of tepals is actually called perianth. The terminology for perianth takes into account various aspects of its shape, the fusion, the merosity. Merosity, I have already told you that uh, it is the what is it? Merosity is the number of parts in a whirl. For example, अगर stamens 3 होंगे, it is trimerous. अगर petals 3 होंगे corolla में, then it is trimerous. 4 होंगे tetramerous. Perianth type is often of systematic value. That is, it has a diagnostic value in taxonomy. It can be used as a character in identification of plant families. So it has great value in the biology itself, taxonomy itself. Perianth type typically reflects adaptive features related to pollination biology. For example, we see in some plants they have that type of corolla, that special type of corolla attract special type of pollinators. We have so many mechanisms of pollination. Some corolla resemble the female insects, and males come while doing pseudo copulation, and in that process they transfer the pollen grains. So there are different purposes of perianth. It helps us in pollination, it helps us in attraction of birds, etc. Such attracting as pollinator for effective transfer of pollen grains is also a purpose of perianth. Some perianth type जो है, some perianths are highly modified for other functions, such as ladicules of grosses, which are reduced perianth parts that, upon swelling, open up the grass floret for pollination. Specific perianth types